Hello everyone, welcome to our channel Football Fantasy and it's the Saturday night show. I'm excited. The transfer rumors are floating in, players are getting signed. Last 10, 11 days to go for the market to get closed and crazy deals happening. Money being thrown around. It's going to be exciting and joining me today again, Prashant and Agrib, as always. Thanks to both of you for joining the show. It's a pleasure. And there's lots of things to discuss about. United 300 million budget, Harry Maguire for sale, quite a bit surprised. Of course, Aubameyang to Chelsea is very close, as we know. We're also going to talk about the Premier League games that happened today. And of course, the ongoing game between Bournemouth and Arsenal. And final nail in the coffin, Prashant, my friend, is going to talk about Sir Jim Ratcliffe, Glazers out movement, and how Jim Ratcliffe could be pros and cons of Jim Ratcliffe being the owner of Manchester United. So many things to talk about. But first of all, Prashant, how are you today? How do you feel as a United fan? Casemiro is now a United player. कैसा लग रहा है? Uh, I'm feeling good. Thanks. I hope you are well yourself. With regards to, yeah, hi, I'm Sheikh. We are here. Casemiro, it feels good, right? But this is the thing that the Glazers have already done, right? Jesse, like as soon as they are under pressure, the money comes out and everything happens very smoothly. So this is another one of those examples. Like last year, we had a similar thing happening with Ronaldo. Until and unless it was not rumored that yeah he's going to City, Glazers weren't interested, United were not interested, and all of a sudden, within 3 or 4 days, the entire deal changed on its head, and instead of City, he's coming to United. So Yeah. here, of course, Casemiro is someone United will be glad to have, right? He will provide steel to the midfield, although he is not the player that United need. Let me just put it in a very short way. He's not exactly what Ten Hag wanted, but it's good. It's another thing. It's just another one of those signings that it's not exactly what the manager wants, but we can still make do with someone like that. It's just one of those. But of course, Casemiro, no doubt about him. He's a world class player, and I'm sure he'll do well in the Premier League as well. And I hope he works out for United. Yeah. MC says Arsenal Lona. Okay, fine. Yeah. Yeah, they're playing very Yeah, good, by the way. absolutely. Yeah, I Sorry. can They're see playing very good. 2-0, 41 minutes. 2-0. तो क्या लगता है कैसिमिरो के बारे में बात करने से पहले अग्रिम भाई क्या लगता है आर्सेनल चांस क्या है टॉप 4 में आएगा आर्सेनल Well, they seem to be promising this year with these guys. What's his name? Gabriel Jesus. They're building a very formidable attack, in my opinion. They're like possibly, they can take out any team this time. too soon I feel too soon. Yeah, but But yeah, three looking games, positive for Arteta. yeah. Yeah, yeah, but look, Uh-huh. yeah, you're right. Looking positive for Arteta a lot. And you know, before I talk about Arsenal and Casemiro, okay, let me read out MC's comment. He says Gerard Shraddhanjali stream. Yes, yes. जेरार्ड के बारे में जरूर बात करेंगे हम ऑफ कोर्स बात तो करना ही है हमें तो बट कैसिमिरो प्रशांत you said that not a signing that Ten Hag wanted. Yes, I agree to that. But someone that United were dying for. Finally, finally, Manchester United get a deep lying midfielder, a defensive midfielder, someone who is rock solid at the back, can protect the back four. Maybe not as a progressive passer like Frankie De Jong, who could carry the ball and stretch the play. So different type of player, but I think that's what Man United wanted more. And if we can sign Frankie De Jong along with him, which looks to be very difficult, it will be hell of a transfer window for us. But yes, I feel that's a perfect signing. And what he's done at Real Madrid, I think there is no doubt. लोग बोलते हैं कि 30 years का है, प्रीमियर लीग प्रूवन नहीं है यार प्रीमियर लीग प्रूवन होने की जरूरत नहीं है उसका गेम देखो टैकलिंग देखो उसे एकदम हरामी प्लेयर एकदम हरामी ही गो इन ऑल आउट मतलब Hmm. he's someone like a Roy Keane-esque player, and maybe the progressive passing उसका इतना बेहतरीन नहीं है, but I think he will win the ball and pass it to players like Eriksen and Bruno Fernandes to create more chances. So I love the Yeah. signing. Yes, 30-year-old, बहुत ही the deal. I mean, the money that's been offered is too much, but I think desperate times call for desperate measures, and Yeah.
uh, like Prashant rightly said, this is more of a signing to keep the fans quiet. But this time, I think the movement is too loud, too noisy, and even if they sign players worth 300 million, the transfer window, and we end up getting De Jong, Anthony, and another striker along with Casemiro. The Glazer out movement is still going to be loud because it isn't about signing players anymore. This, if they were actually that ambitious, ये पहले हो जाना चाहिए था. Now, until 10 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे रैबी और क्या नाम है वो प्लेयर का, वो Arnautovic, आर्नाटोविच Arnautovic. के बारे में. हाँ, कहाँ रैबियो आर्नाटोविच और कहाँ एंटनी एंड कैजेमीरो. तो हाँ प्रशांत कुछ Casemiro. बोल रहा था, सॉरी तुझे कट करने के लिए. नहीं मैं वही बोल रहा था अर्नाटोविच लाइक थोड़े दिनों पहले वहां पे थे वी वर टॉकिंग अबाउट हिम एंड नाउ वी आर talking about these signings. So obviously it is a turnaround. Obviously, one very important factor is a very non-footballing factor because what happened in those 24 to 48 hours after the defeat. Yeah, by Jim Ratcliffe came out. He said that, okay, yes, I'm interested in the club. And all of a sudden, Glazers have this money. And again, like what I have been telling to many of my friends, this is my theory, not necessarily a proven fact, but Perez and Glazers, I think they definitely have some kind of a, a partnership or connection between them, as in they were together for the Super League. Remember that. Yes, and Yeah, we all know yeah. Glazers were instrumental in, and I'll emphasize the word instrumental in the formation of that particular Super League. So कहीं ना कहीं उन लोग का पहचान है and for Madrid, just like Varane last year, they would have thought it's a good deal for us, right? Like इतना मतलब we are getting a decent amount plus add-ons. It's not just 60 million, it's 60 million plus 10 million add-ons Plus depending on the add on. And it's pounds, not euros. It's pounds, not euros, yeah. which is again a huge. Yeah, It's huge, correct. So it is still a shit signing. It's a very incompetent signing because अगर ये करना होता 2-3 हफ्ते पहले कर लेते तो इतना पैसा नहीं देना पड़ता. And Hmm. ये Yeah. also remember the fact that now it's no longer just about the players, as you mentioned about the Glazer out moment, because it's visible everywhere. The stadium itself will need renovation. It will need a lot of restructuring. The stadium, not training just the club. facilities. The training facilities, everything will need money, and the Glazers are not going to be willing to put that money in. So either the brand which they are so valuing so much will be uh, it will decrease, the brand value will decrease, or they'll just have to sell the club. So it's getting up to that point now. So that is why, and we have several moments like the 1958 moment, and we have the MUSP. A lot of them are doing different things to achieve this target of getting them out. Although there is no concrete information about them going out completely, but the pressure is on them. The report on Glazers is that even the Glazer brothers are split. Like Joel and Avram Glazer want to remain, the others want out. So yeah, Mhm. that's what I like to say. And MJ has mentioned Govandi ka Roy King so about Casemiro. So ऑफ कोर्स वो बारसा फैन है तो वो तो अभी रियल के प्लेयर्स को, रियल का एक्स प्लेयर को तो बोलेगा ही गो एंड कैसे मिला. आई एम हैप्पी द साइनिंग वाइज बढ़िया है. आपको लॉन्ग टर्म नहीं है, बट आई थिंक इंस्टेंट इम्पैक्ट आएगा एंड ही इज अ लीडर इन द टीम. सो वो एक प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में ऐसा कैरेक्टर चाहिए, ऐसा प्लेयर चाहिए जो विनिंग मेंटालिटी लेके आए. आई नो वी हैड वरान एंड रोनाल्डो, बट ये लेट्स सी दिस वर्क्स आउट. बट अगेन प्रशांत राइटली सेड ग्लेजर आउट मूवमेंट डजंट स्टॉप. हाँ कुछ बोलना and चाहता है प्रशांत, बोल. एक और interesting चीज, I don't know if you all have read, but because Casemiro is now confirmed to United, apparently there are clubs who are now lining up to sign Scott McTominay. What do you think of that? Who's buying Scott McTominay? कौन बाय Sorry, कर रहा है स्कॉट मैकटोमिनी को? मुझे That लगता one should नहीं be of the कोई बाय कर question. रहा है. one of That them should be is the question, sir. Sam. Hmm? आई डोंट थिंक any half decent club would want Scott McTominay. Not to criticize the Exactly. player, passions बहुत है और ये मतलब Hmm. aggressive है, but passing not good. 5 yard pass सही से नहीं कर पाता वो, और Exactly. tackling तो भूल ही जाओ. Fouls commit करता है passionately, but it doesn't help. It's been we've tried this for the last 2 years. Fred and McTominay ain't working together.
Casemiro and Fred might work. I'm not sure, but McTominay, I don't think is. I more get of a cleverly vibes from Tom Cleverly vibes. So वो भी not चला नहीं, and then he had to go to Watford, and yeah, he still plays there. But yes, moving on from Casemiro, and 300 million budget जो है ये 10 का, what ये अगर ग्लेजर्स को देना होता तो पहले ही क्यों नहीं दिया? I mean, this is what the it's not about the money they have spent. उन्होंने 1 billion spend Hmm. किया है. If you add the Yeah. Casemiro deal, it's 1.5 billion after Sir Alex retired. It's not about the money they spend. It's about the attitude, the way they've dealt with the problems at the club. It's gone and on. अभी अभी जो panic mode पे आ गया है, we lost 4-0 to Brentford. Voices started getting louder and louder. That's exactly when they know now. अभी बैंक में सिक्योरिटी में पड़े हैं 300 मिलियन, चलो निकालते हैं. अभी 300 मिलियन डाल देंगे, क्लब बचा लेंगे ओनरशिप, $1 billion कमा लेंगे अगले 10 साल में. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, बट लॉन्ग टर्म हम कमा लेंगे पैसे. दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज fans should not get fooled by this, and even if they end up spending for 300 million and Ten Hag gets all these players, Glazers have to glow. तो इसके ये टॉपिक से थोड़ा हटके कुछ और बात करते हैं. We're going to talk about the possible ownership if Glazers were to sell this club. But moving on from United to Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang linked to Chelsea, the deal looks like it's going to happen. Maybe not today, maybe not tomorrow, in a couple of days. क्या लगता है अग्रिम भाई, बारसा को ज्यादा इफेक्ट करेगा डिपार्चर ऑफ Pierre-Emerick Aubameyang? No, because they already have gotten Lewandowski, na? So I think it shouldn't be a problem Hmm. because primarily he's supposed to be the number 9 for Barcelona. But yeah, I think Aubameyang was like a short-term answer for Xavi's, issues. But somehow, I mean, it's an upgrade, having Lewandowski in your team. But I think, and plus, Barcelona needs money to register Kounde as well Hmm. for like 20, Correct. it needs 22 million and needs to be sorted possibly by this week or probably by latest by next week. So in that way, I think Kunde should be registered. And I think even just to add one more thing, Marcos Alonso deal could be off. Yeah, that's what I was going to ask you. So क्या सीन क्या है Alonso का? I mean, मुझे लगा वो चला जाएगा बारसा, everything was agreed, और लास्ट मोमेंट ये क्या हो गया? I mean, why they are not going for, and I'm also hearing they need a right back. तो दुनिया भर Yeah. के राइट बैक से लिंक्ड है, तो क्या हो क्या Mm-hmm. रहा है? Yeah, because बैंक Chelsea हॉलिडे था apparently they're एमशे. uh, that को किस बात पे घमंड है? यार, I don't have no idea. But anyway, I but he's wasting his time at Barcelona. He should be going anyway. Coming back to the point, like Marcos Alonso ka deal is like very shady. I don't understand why would you pick a 31-year-old guy from Chelsea just to play what do you call attacking football sort of a thing, because he's meant for Tuchel's system. He doesn't work in Xavi's system, in my opinion. But it's an Yeah. unnecessary buy. And secondly, I just wanted to say, Chelsea are also like so hell bent. They want basically to reduce the money for Aubameyang, which is ridiculous. 25 million क्यों नहीं दे पा रहा है ना? That should be the question. Hmm. But they are Hmm. including 15 million plus Alonso in that deal. salary, क्या बोल रहे salary. थे? एमशे बोल रहा है Alonso was asking for salary, that's why the deal broke. Could Yeah, be. but मैं इतना after chasing so much, and I think I'm Yeah. not sure why Chelsea are not letting him go, because Alonso is now a surplus to requirement. They already have two top left backs. They already had one. Now they've signed Chilwell के अलावा ये कुकरेया को sign किया है. तो दो left Hmm. backs है. So I don't, Chelsea, maybe not to Barcelona, but they will have to sell Alonso to someone, because now it's a liability Yeah. for them. 3 left backs की जरूरत नहीं उसका है. वैसे Not भी ऐसा like नहीं 1 कि year contract है ना? Hmm. हाँ ऐसे 1 year कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और ऐसा नहीं कि Yeah, but कुकरेया और हाँ, चिलवेल Chilwell. बहुत वाइड राइट बैक भी खेल सकते हैं. दोनों प्योर लेफ्ट बैक है, तो ऐसा Hmm. रोनाल्डो भी प्योर लेफ्ट बैक है, ऐसा राइट बैक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं सकते चेल्सी के लिए. But Alonso का तो one आई good डोंट thing डज. about him
मेरे हिसाब हम्म से what I've seen from Kukurea and Alonso is like like attackingly both are good, but मेरे को लगता है Alonso has like the slightest of edge over Kukurea हम्म because he has like Champions League हम्म experience also, ना. हम्म कुकरे यंग है, लेकिन यंग है एंड ही विल लर्न, ही बट विल गेट बेटर बिल्डअप एंड में अच्छा बेटर। है बट ही हैज एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस ना हाँ। Alonso. क्रॉसिंग भी अच्छी है कुकरे की, कुकरे की क्रॉसिंग बहुत बढ़िया है। Yes, that's true. फॉरवर्ड रन अच्छे है, ऑफकोर्स ओलंजो को भी सिमिलर Yeah, फीचर्स है, बट ओलंजो इज 31, सो आई डोंट थिंक yeah. मेक सेंस फॉर चेल्सी टू कीप हिम आफ्टर हैविंग चिलवेल एंड कुकरेया। तो Mm-hmm. कल वॉच अलोंग होगा, सिटी वेस्ट हैम का होगा, एंड दी दोनों, और दूसरा Newcastle. होगा बारसा सोसीडैड, बट दोनों अग्रिम भाई के Mm. चैनल पे होगा, हमारे चैनल पे नहीं। Yes. तो बारसा रियल सोसीडैड एंड वेस्ट हैम सिटी दोनों अग्रिम भाई के चैनल पे हम करेंगे वॉच अलोंग। तो जॉइन इन एमसी, जॉइन करना एंड इट बी फन, मजा आएगा। देखते हैं कल कौन से मिडल ईस्ट ओनर्स जीतते हैं, सऊदी जीतता है या Mm. एतिहाद के ओनर्स जीतते हैं, मजा आएगा देखने के लिए। That will be an तो interesting कमिंग match. बैक टू, हाँ मजा आएगा। आई मीन संडे नाइट प्राइम शो है, तो 9 o'clock का Yeah. मैच है, तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग Mm-hmm. होगा। कमिंग बैक टू चेल्सी, आई मीन फैंटास्टिक साइनिंग, पर मुझे लग रहा था चेल्सी में नॉट कम्पीट फॉर टॉप 4, बट फ्रॉम व्हाट इट Mm. सीम्स लाइक दे आर वेरी गुड टीम। एंड अभी Yeah. जो साइनिंग उन्होंने की है, दे आर वेरी लुकिंग, ऑल ऑफ देम आर लुकिंग गुड, कॉन्फिडेंट। एंड इफ दे गेट ओबामयांग, हु इज ट्यूचर जिसका बहुत बड़ा फैन है, एंड ही लाइक्स, Mm. तो आई थिंक इफ ओबामयांग लाइक्स वेरी प्लेस, तो वो अच्छा डिलीवर करेगा। इफ ही इज नॉट हैप्पी वेरी इज प्लेइंग, तो वो जो आर्सेनल में हुआ फालतूगिरी लास्ट 6 महीने, वो होने वाला है। तो Yeah. थोड़ा रिस्की साइनिंग Yeah. है चेल्सी के लिए, बट आई थिंक उसका रिलेशन ट्यूचर के साथ अच्छा है, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कल वॉच मैन यूनाइटेड का, भाई मैन यूनाइटेड का मैच परसों है, मंडे रात को है। ऑफकोर्स वो इस चैनल पे Mm. करेंगे हम, लिवरपूल यूनाइटेड, वो परबट Yes. परसों है, मंडे नाइट है। एरिक बम हैक श्रद्धांजलि स्ट्रीम, भाई 3 मैच के बाद तो श्रद्धांजलि नहीं होगी उसकी, इसकी तो बहुत भाई मैचेस बाकी तू है। तो जल्दी निकालने पर खुल गया है भाई एमसे. क्या खुल गया? मैं जिनको बोल रहा हूँ ये से जल्दी भाई को, जल्दी निकाल, ये सैक करने पे तुला हुआ है एमसे तो. हाँ वही, तो किसी ना किसी को सैक से याद करना आया ही है। मुझे। क्या बोल रहा है? किसी वो बोल रहा है, किसी ना किसी को सैक कराना ही उसको। यस. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले सैक कौन होगा, लैम्पार्ड था, फिर और कौन था, हम्म. और मेरे किसका को नाम लिया लगा था हमने स्टार्टिंग में? जेराड. जेराड. जेरार्ड का नाम लिया नहीं था, बट अभी मुझे जेरार्ड लग रहा है भाई। इसका रिकॉर्ड तो अभी ट्विटर पे बोल रहे हैं गैरी नेविल से भी गंदा रिकॉर्ड है, और प्लेयर्स क्या बढ़िया भी दिया उसको। नहीं बट मेरे को कोटिन्हो लगता है दिया थोड़ी है, बैंडिंग कमारा करेगा दिया ये, है। ऐसे ऐसा थोड़ी ऐसा ऐसा नहीं निकाल देगा. लैम्पार्ड की बैंड बच सकती है बिकॉज लैम्पार्ड आज भी मतलब उसके मुंह में आगे थे. नॉटिंघम फॉरेस्ट वाज लाइक 1-0. और थोड़ा हाईलैंड खेलने के चक्कर में दे दिया गोल एग्जैक्टली. बना है। तब या वो कैसे करके तो बचा लिया भाई. बड़े एवर्टन मेरे को इतना लग रहा बहुत, है रिलीगेट होते हैं. मुझे लगता है जेरार्ड एवर्टन मेरे को. बहुत, हम्म. हाँ ये ओवररेटेड मैनेजर है, ज्यादा कुछ ओवररेटेड है। उसकी टीम के पास इतने अच्छा प्लेयर है, बट दे लुक, मतलब क्लू नहीं है साथ में खेलने का, अंडरस्टैंडिंग नहीं हम्म. है प्लेयर्स के बीच में। आई दैट्स मीन ट्रू. कितने फैंटास्टिक प्लेयर है, फिलिप कुटिन्हो, कमारा, वो बुंडिया करके बंदा है। फिर ऑफकोर्स उनका वो जेकब हम्म. रैमजी अच्छा है, उनका स्ट्राइकर वाली यप. वॉटकिंस मस्त है यार, उनके डिफेंडर्स अच्छे हैं। पता नहीं बट क्यों उनका क्लिक नहीं हो रहा है, क्या है इशू है। मुझे जो प्रॉमिस जो बोल रहे थे, जो रेंजर्स से जब आया था, ये फैंटास्टिक मैनेजर है, विल टेक विला टू द नेक्स्ट लेवल, बट मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, टू मच हाइप लग रहा है। और यू नो हाँ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस हिपोक्रेसी, अगर ये नॉन ब्रिटिश मैनेजर होता ना, तो दे वुड हैव रिप्ड हिम अपार्ट, मीडिया वुड हैव रिप्ड हिम या. अपार्ट, बट कोई भी इस तरह बात नहीं कर रहा स्टीवन जेरर्ड के बारे में। मतलब जो अंडर परफॉर्म कर रहा है ना वो, विद द बंच ऑफ प्लेयर दैट इज, आई नो 3 गेम ही हुए हैं, बट लास्ट सीजन भी उसने कुछ बढ़िया नहीं किया था आफ्टर ही टुक ओवर। एंड हम्म. जनवरी में उसको साइनिंग अच्छे अच्छे दिए थे उन्होंने, फिलिप कोटिन्हो थे और 2-3 वो लेफ्ट बैक एवर्टन का लेके आए थे, तो अच्छे अच्छे बैक किया था उसको, अभी भी बैक किया उसको, बट आई बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये सेम बैकिंग अगर सेम प्लेयर्स पैट्रिक वियरा या डेविड मॉयस को दिए जाते, दे वुड हैव डन रियली वेल। टॉप 4 के लिए वो चैलेंज करते हैं, आई एम नॉट सेइंग टॉप 4 में आते वो, बट फाइट देते हो टॉप हम्म. 4 टीम्स को। तो दैट्स आई ट्रू. थिंक दैट स्टीवन जेरार्ड का हाइप कुछ ज्यादा है, बट लेट्स सी, 3 गेम ही हुए हैं, तो आई वुड रादर वेट। हाँ प्रशांत, तू कुछ बोल रहा था? I was thinking
the only reason here is कि भाई जो क्या बोलते हैं स्टीवन जेरार्ड डिड क्वाइट वेल एट रेंजर्स अपेरेंटली, तो वो एक चीज था उसको हाइप अप करने का, तो मीडिया को वो एक एक्सक्यूज मिल गया। सेकंड थिंग इज कि ठीक है, उसमें भी काउंटर ये हो सकता है कि रेंजर्स वो ऑलरेडी डोमिनेटिंग द स्कॉटिश प्रीमियर लीग, मतलब स्कॉटिश प्रीमियर लीग में दो ही है, ग्लासगो रेंजर्स और ग्लासगो सेल्टिक, तो दोज आर द ओनली टू टीम्स व्हिच आर डूइंग एग्जैक्टली, वेल। सो टू हॉर्स रेस है वो। इतना भी करना मतलब इट वाज एग्जैक्टली। सो ठीक है, मीडिया ने हाइप कर दिया, बट आई थिंक यू आर राइट। सी धीरे धीरे उसका, बिकॉज यू नो ही इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म, ही विल कम अंडर प्रेशर। ठीक है, एमशे बोल रहा है डिड यू सी नेविल एंड कैरेगर क्विजिंग एरिक एंड हार्ट like he was लाइक ही responsible वाज for losing रिस्पॉन्सिबल फॉर Russia, क्राइम्स इन हाँ, रशिया। अरे Crimea to Russia, yeah. नेविल और कैरेगर वही दोनों वाहियात लोग हैं, दोनों फालतू बात करते हैं। नेविल कभी कभी तो Yeah, but अपनी Yeah, बात ढंग का बात करता है। Carragher makes some valid points also, but he is quite smarter than Neville, in my opinion. Makes some valid बेतुकी points. बात करता है कैरेगर भी, हाँ, कभी कभी वो बेतुकी बात करता है, बोलता है कि ग्लेजर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, ग्लेजर्स ने तो पैसे दे दिए। अरे भाई, ओनर है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल ओनर को होता है। तू पैसे देके, मैं बोलूंगा कि मैंने तो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे अंडर 15 लोग हैं, पैसे दे दूं, 15 लोग जो नहीं, Hmm. 15 लोग अच्छे करे कि ना करे वो मेरा ध्यान, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्ट्रक्चर क्लब का गलत है, सब कुछ गलत है, द वे क्लब इज सेटअप, अरे एवरीथिंग इज रॉन्ग अबाउट द क्लब। So, हाँ, अरे लिवरपूल का मैंने उतना भी देखा ना, लिवरपूल के फैंस को दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग। लाइक देयर वाज अनदर पॉडकास्ट जिसमें एडम मकोला गया था, तो उसको hmm. भी हम्म, कोई तो लिवरपूल फैन था उसके सामने, वाज स्टैंडिंग इन द, बट ही हैज नॉट स्टार्टेड these players, so that's his fault, right? So it's not his fault, उसके पास जो प्लेयर्स है वही है ना, like he can only start एग्जैक्टली, what he's got, but still they are saying हाँ, कि not have started these McTominay, maybe started McFred, ऐसे सब पॉइंट दे रहे हैं, सो दैट्स रिडिकुलस। मतलब मीडिया में दे आर लाइक, आई डोंट नो, देयर इज अ रियल हेजिटेंसी अमॉन्ग्स्ट द मेन स्ट्रीम मीडिया, ओनली अब जाके, like in the past few weeks they have spoken out about the Glazer ownership after हम्म, Gary Neville हम्म, actually finally spoke out as well। उसके पहले वो लोग कभी भी ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते थे कि दिस इज अबाउट ग्लेजर्स ओनरशिप, दे आर सेइंग कि हाँ यूनाइटेड आर नॉट शोइंग इनफ एम्बिशन, दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई डू यू थिंक दैट इज? Why do you think, हम्म, where do you think this non-ambition approach is coming? It's stemming now from the top. So Hmm. ठीक है करेक्ट, यार, यूनाइटेड एग्जैक्टली। का तो मतलब ठीक है, हाँ, वही। So Steven Gerrard should for the sack, yeah, FTS, Steven Gerrard FTS, ये हैशटैग चलेंगे अपन पर। एमशे बोल रहा है, नो वन आस्क्ड एनीथिंग टू ओले हाँ, गुनार सोल्शैक, क्योंकि भाई अब दोस्त था मेरा, गैरिनर का फ्रेंड था वो, एक्सेप्ट फॉर रॉय कीन, सब उसको बैक कर रहे थे, एवरी वन वॉज बैकिंग हिम, एंड आई एट द That एंड मुझे लग रहा है ज्यादा ड्रैग किया, दे ड्रैग्ड इट टिल दैट वॉटफोर्ड गेम, मुझे जरूरत नहीं थी, दे कुड हैव शुड हैव सैक्ड हिम आफ्टर द लिवरपूल गेम। आई थॉट विला गेम के बाद उनको सैक कर देना चाहिए था, बट नहीं, चलो लिवरपूल को टाइम दिया, बट जो लिवरपूल का ब्लंडर किया था, यू शुड हैव बीन गॉन, बट नहीं, हमने वेट किया, सिटी के बाद वेट किया, सिटी गेम के बाद तो 2 वीक का ब्रेक था, सबको घर भेजा, सबको रिलैक्स करने के लिए फ्रेश माइंड करके वापस आए, वॉटफोर्ड के सामने वो ब्लंडर किया, फिर जाके सैक किया। आई मीन, टू लेट, टू लेट। फ्लूक, फ्लूक इनो इजंट गुड दो। that's true. कोटिनो के बारे में Yeah. बात कर रहे हो, फ्लूक इनो। Obviously, he couldn't live up to his performances and expectations. करेक्ट, बारसा में भी इतना ओके था, बायन में बिकॉज प्लेयर्स उसके अराउंड टू गुड एंड बायन वाज विनिंग एवरीथिंग, तो उसका कुछ Yeah. फॉल्ट उसके छुप पास गए ज़्यादा थे। इम्पैक्ट ही नहीं विला था। में, Yeah. करेक्ट, विला में स्टार्ट अच्छा था, बट देन अगेन उसका प्रॉब्लम वही है, कंसिस्टेंसी नहीं है उतनी जो उसको होनी चाहिए, That's तो true. Hmm. वो इशू है। बट लेट्स, जैसे कि मैंने कहा, तो 3 गेम ही हुए हैं, लेट्स नॉट जज जेरार्ड एंड द प्लेयर्स बाय 3 गेम, बट अगेन मुझे Yeah. लगता नहीं है, छह, जिस नॉट जस्ट 3 गेम, 6 महीने के भी पीछे देखूं तो कुछ गेम्स में अच्छे थे, कुछ गेम्स में बुरे थे, कंसिस्टेंसी नहीं था, तो लेट्स सी कौन सैक Hmm. होता है, जेरार्ड, लैम्पार्ड या बोर्नमथ का मैनेजर। Hmm. फ्लूकिनो, Oh. इधर ये तो पढ़ा कमेंट हमने, तो यार मूव ऑन करते हैं आज के गेम्स के बारे में। जेरार्ड और हमने जेरार्ड के बारे में बात किया, बट वी लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट पैट्रिक वियरा, फैंटास्टिक मैनेजर,
what he's achieved at Crystal Palace is brilliant, with so limited resources to manage the team in that style. तो team की approach कितनी बढ़िया है. And I like the way they Hmm. play together as a team. They defend together as a Yes. team in numbers. When they attack, everybody's, सबको बीच में understanding है. They know where one player is going. क्या नाम था उसका, वो midfielder attacking, एजे Is जाहा, it? फिर वो जो गोल स्कोरर Yes. था, वो क्या नाम है उसका, फॉरगॉट, एंड्रयू आयू. तीनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग Right. कितनी बढ़िया थी. एंड आई रियली लाइक वियरा का टैक्टिक्स जो है. और वो नॉट दिस सीजन, लास्ट सीजन भी दे वर अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट. एक चीज मुझे अच्छा Yeah. लगता है, अगर आर्सेनल के सामने आप देखोगे ना, दे लॉस्ट दैट गेम बट दे वर नॉट सिटिंग बैक. वो Hmm. फीडबैक के लिए डिफेंड नहीं कर रहे थे. दे वर अटैकिंग आर्सेनल. ऑफ कोर्स दे कंसीडर्ड गोल्स एंड उनके कुछ इश्यूज थे, बट अगेन विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेस टू अचीव दिस इज रियली गुड. क्या लगता है प्रशांत तेरे को? Uh, See, Crystal Palace have been, when Patrick Vieira took over from Roy Hodgson last season, right? There was a little bit of skepticism around Vieira because उसने obviously Premier League में नया वो तो generally English media का रहता ही है, कोई भी will he be able to do it in the Premier League? Will he be do it on no rainy Wednesday night at Stoke? वो classic जैसा था, वो तो उन लोग का रहता ही है. They have it for every manager who comes or every player. But if you just compare to what Palace are right now, comparing it to how they were under Roy Hodgson, they have not digressed or regressed as a club. They have not करेक्ट, gone back. They have करेक्ट. continued moving forward slowly. They have remained well. They have kept that consistency. चलो ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम हो चुके, but at the same time they have continued the trend of remaining at least in and around the mid-table positions that they have been getting. So they don't have to worry about being a relegation candidate at least in coming years. And for a club like Palace, that is quite a big thing. So I think he has done all right. अच्छा खासा काम किया. And managerial future अच्छा है भाई का. I guess as an ex-Arsenal player, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी होगा that maybe he'll be shooting for a job there. Who knows? आर्टेटा की नौकरी खाने के चक्कर में भाई. तो प्रशांत, मुझे को तू दिखाना है. बट और तू आने से पहले तू आने से पहले मैं और अग्रिम भाई डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में. मैंने अग्रिम भाई को बताया था, शायद तूने भी देखा होगा ग्रुप में, बट जैसे शेयर कर ही देता हूँ मैं. यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुझे स्पेशली पसंद आएगा. सरप्राइज है तेरे लिए. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. देख ले तू देख ले, फिर बता मुझे. देख रहा है तू? दिख रहा है तुझे? हाँ लॉ हाँ कौन लॉस है देख. होंडा एकाडी. हाँ उसके शी इज इन यूके राइट नाउ वेयरिंग, उसके बच्चे लोग यूनाइटेड का जर्सी पहन रहे. हाँ लॉस एक्स्ट्रानो. हाँ एग्जैक्टली. हाँ तो I तेरी guess the फेवरेट का two extras, two extras. तो यार So क्या लगता basically, है she is angling for a move to United. हाँ, आई थिंक उसके तो टर्किश क्लब ने मना मैम कर तो दिया. लग रहा है. हाँ 9 मिलियन मांग रहा है वेज. हाँ 9 मिलियन वेज मांग रहा अरे है. तो तो क्या. बेसिकली दीदी. हाँ, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? क्या पता. मैं यही बोल रहा था कि भाई वांडा इकाडी को मैं आई रेफर टू हर एज दीदी फ्रॉम नाउ ऑन आउट ऑफ रिस्पेक्ट. And secondly, Bibi is angling for a move to Man United for her husband because Bibi को पता है कि Man United are looking for a striker. That's true. हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. from हाउ go टू to गो Panvel from Kalyan. पनवेल फ्रॉम घर. भाई बस मिलती है, बस से जा भाई. कल्याण की आई थिंक वसूली भाई बस से मिलती है. पूछते हैं. वसूली भाई से मिलने हाँ जा रहा है. जल्दी बोल, पनवेल जाना है. बोल बार्सिलोना के लिए भी थोड़ा पैसा दे दे. तो क्या करेंगे? इन हाँ टुडेज एपिसोड ऑफ कीपिंग अप विद इकार्डियंस. चूना कीपिंग लगा अप के विद इकार्डियंस एक नंबर था. राबियो, इकार्डी, CR7 द पीस ब्रो. अरे भाई CR7 को निकाल इसमें से. CR7 बहुत मेरा हाँ फेवरेट है, तो कुछ बोल मत. CR7 राबियो रिकार्डी का लेवल का है ही नहीं. अभी बहुत बहुत कुछ हमें CR7 को तो स्केपगोट बनाया गया फुकट में. अभी कुछ
यूनाइटेड का गेम खराब हुआ है, लूज डाइवर्ट किस अटेंशन करो, सोशल मीडिया पे डाल दो रोनाल्डो इज क्विटिंग द टीम, रोनाल्डो इज दिस, रोनाल्डो दैट। तो ये CR7 को तो स्केपगोट बनाया। प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। पहले बोलते थे पॉगबा प्रॉब्लम है, पॉगबा ये है, पॉगबा वो है। अभी तो पॉगबा नहीं है, तो इश्यूज तो वही है ना। ड्रेसिंग रूम लीक्स, पॉगबा, लिंगार्ड और हेंडरसन है, तीनों चले गए, लीक्स तो आ ही रहे बाहर। तो ये तो मतलब CR7 का नाम फुकट में बर्बाद करने, खराब करने का ये है, कुछ है नहीं। तो लेट्स से इसको बना दो स्केपगोट, यूनाइटेड लाइमलाइट में रहेगा नहीं। तो ये पहले से करते हैं ये लोग। मेरे मेरे हिसाब से अब तो आई एम काइंड ऑफ श्योर कि द लीड्स आर इधर कमिंग फ्रॉम रैशफोर्ड, मैक्टोमिनस और मे बी मार्शल। ये तीन बंदों में से ही कोई होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज वही लोग हैं जो कॉमन रहे बाकी सबके थ्रू। बट हु नोस, वी आर सांचो भी हो या सकता है, नेवर नो। एक्चुअली सांचो भी हो सकता है, नेवर नो। मे बी, हाँ मे बी, एनीवन कुड बी, बट ये जो भी है मुझे तो जानना भी नहीं है कौन है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, और आई वांट दिस दैट दोस थिंग टू स्टॉप। ये बंद करना बहुत जरूरी है। एंड लोग ये, पीपल डोंट क्वेश्चन दिस, व्हेन यू लुक एट द रैगनिक टर्म, रैगनिक 6 महीना थे, उसमें डैरेन फ्लेचर वाज ऑन द साइडलाइन, टेक्निकल डायरेक्टर बीइंग इन दैट ड्रेसिंग रूम, स्टिल दोस लीक्स हैपनिंग। आई मीन ही शुड बी, उसको कॉलर पकड़ साइड में चाहिए, भाई तू तू क्या कर क्या रहा था, तू तू टेक्निकल डायरेक्टर है, वो तो इंटरम मैनेजर था, वो कोशिश कर रहा था कुछ करने के लिए, तू यू कुडंट स्टॉप इट। और ऑफ कोर्स मुझे डेफिनेटली मालूम है, ये जॉन म्यूटा और डैरेन फ्लेचर को मालूम ही होगा ये लीक्स कौन है। दे डेफिनेटली मस्ट बी नोइंग कौन कर रहा है कौन, बट स्टिल दे हैवंट पुट अ स्टॉप टू इट। और डैरेन फ्लेचर शेमलेसली उधर बैठा था, यू लुकिंग एट एवरीथिंग, एंड येट दे डिडंट स्टॉप। तो मतलब ये इनकॉम्पिटेंस है, ये सैकेबल ऑफेंस है। बट ऑफ कोर्स ये हमारे मेट्स है, ये हमारे अंदर से आए हैं, तो इनको क्यों हमें सैक करना है, क्यों ब्लेम करना है। क्या बोल रहा है, रैशफोर्ड तो जमाई राजा जैसा है। ये बिल्कुल बिल्कुल, आई दैट्स ट्रू। आई 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 ट्वीटेड समथिंग व्हिच आई वांट टू शो बोथ ऑफ यू, फ्लेचर 100% विन रिकॉर्ड। नहीं, कैरिक था, कैरिक, अरे कैरिक किधर था यार, बेचारा तो छोड़ के चला गया। आई वांट टू शो यू समथिंग आई ट्वीटेड, और तुम दोनों का ओपिनियन लेना था, कितना मैं सही हूँ कितना गलत हूँ, ठीक है। हम्म। तो रुको, देखने दो, हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। डू यू थिंक इट मेक्स सेंस, टू डू दिस? थोड़ा जूम कर ना, हल्का सा। हाँ, रुक जा, मैं पोस्ट को ये तुम कर कर। देता हूँ। रुक जा, अभी अभी दिख रहा है। हम्म। गाय ये बोल इसमें इसमें लिसनिंग इसमें एंड पूछा है कि टेक योर पिक, कोडी गैक्को, एंटनी और यानिक करास्को। तो मैंने इस पे लिखा है, बाय बोथ एंटनी एंड गैक्को एंड सेल रैशफोर्ड टू PSG, डू इट बिफोर ही बिकम्स अनसेलेबल ऑन ह्यूज वेजेस। हम्म। एग्जैक्टली कर एक्चुअली सकते हैं, ही बिकॉज शुड वी बी बिकम सोल्ड द ऑफ। प्रॉब्लम। या ब्रदर टेरेसा बन के बैठा है तो वो से वो गुडविल के साथ हम लोग उसको रख नहीं सकते ना, खिला नहीं सकते। ही हैज टू एग्जैक्टली, परफॉर्म एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल एंड बिल्कुल। दिस एंड इज हाँ बोल, हाँ सॉरी। हाँ। सो आई वाज सेइंग कि मतलब बहुत से आई थिंक इट इज हैपनिंग विद मेनी प्लेयर्स वेयर obviously जब वो लोग सोशल चीजें करते हैं that's not a bad thing, that's a very nice thing, but when they start getting involved into those social causes and things like that, it ends up inevitably affecting their performance, it affects their focus. So maybe that is what has happened with Rashford as well. What does Rashford actually do? Yeah, we don't know, I'm sure. That's why I was talking about his transfer. हम्म Maybe आपकी once he PSG gets, ऑफरिंग 60 मिलियन, मैं तो ले लूं 60 मिलियन भाई, 60 मिलियन ले लूं, गैप को हाँ एंटनी लू, 80 मिलियन प्लस 35 मिलियन फॉर गैप को, तो कितना हो गया, 120 मिलियन में गया, 60 मिलियन रैशफोर्ड के मिले, तो 60 मिलियन में दोनों प्लेयर हो गए। यप। वेरी गुड डील, बट करेंगे नहीं ये लोग। इनको रैशफोर्ड का जो PR से मिलता है, उससे उससे क्लिक्स मिलते हैं, सोशल मीडिया से जो जनरेट होता है रेवेन्यू रैशफोर्ड का, मतलब उसको एक ये गोल्डन बॉय बना के रख दिया है। आई हाँ और उसको मतलब आई वुड बी सरप्राइज, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे वो लोग, और अच्छा वेज इंक्रीज भी करेंगे लोग, इन स्पाइट ऑफ हिम नॉट परफॉर्मिंग ऑन द पिच। तो लाइक आई सेड, मुझे कुछ रैशफोर्ड से पर्सनल इशू नहीं है। आई डोंट थिंक दैट ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, वेरी गुड, बट
attitude of Mbappe and performance of Welbeck. That's what we are seeing now. So that needs to change. I'm not saying that can't change. Very talented. बहुत ही मतलब उसका जो pace है is fantastic and things that you can do is something unbelievable. But अभी ध्यान फोकस कुछ कहीं और शिफ्ट हो गया है और कोचेस को ब्लेम करना दूसरों को ब्लेम करना परफॉर्मेंस के लिए रोनाल्डो का इंट्रोडक्शन अच्छा की वजह से हुआ है रोनाल्डो ये कोच का टैक्टिस ऐसा नहीं है तो दैट नीड्स टू स्टॉप एमशे से रैशफोर्ड खाली वर्क एक्सपीरियंस के लिए है इंस्टेड ऑफ रैशफोर्ड सेल सैंचो आई डोंट थिंक सो सैंचो को एक ही सीजन हुआ है 74 million Sancho is younger than Rashford. Rashford 24 का है, Yeah. Sancho is on 21. So there is a lot of promise, and I respect your opinion, Narendra Guru, but I think it is Rashford that is more, काफी टाइम से है and he's been in and out. कभी परफॉर्म अच्छा करता है बहुत, कभी completely clueless लगता है. तो Yeah. Rashford is someone who needs to go compared to Sancho. Now I'm not saying that बेच ही दो उसको. Maybe he will work out this season, but right now, as it seems, between Rashford and Sancho, I would rather sell Rashford than Sancho. Mshe says, is there any club whose fans threw their owners out? I don't think so. Prashant, is there any? Newcastle. Sorry? No, अरे Newcastle Newcastle भाई बोल सकता है. Newcastle somewhat. no, they Newcastle. protested actually, and they were lucky that the Saudis came in. They did not like throw them out. Again, उन लोग का हालत भी वैसे United जैसा ही था कि वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे काफी साल तक. Yeah. So But what somewhat वही happened? situation था ना. मतलब वैसे तो निकाल ही दिया ना. Steve Bruce got a good offer. It was not because of the fans. It was not because of the fans. No, it's ठीक है. not. But तो भी मिला ना उनको. They got their club back ना. But his question is who threw him like a club who threw the owners out. So Newcastle did not do that. They did not throw it out. throw the owners out. Correct. Exactly. भाई So वो बंदा तो बहुत ही हार्ड था भाई बंदा वो बहुत हार्ड उस हाँ. he wanted to buy that club वो कौन था जो डाबी काउंटी उसको वो अभी खरीदना था काउंटी है. माइक एशली आई थिंक राइट माइक एशली वो संडरलैंड के पीछे भी तो पड़ा था. न्यूकासल के हाँ राइवल. ऊपर से मतलब लेजेंडरी राइवलरी है न्यूकासल और सनडरलैंड उसको खरीदना था न्यूकासल को भी ये फर्क क्या पड़ेगा. नाउ इज गॉन. हाँ अभी फर्क नहीं पड़ता उसको प्लीज पुट सम रिस्पेक्ट ऑन एनुअल वेलबैक्स डे हाँ भाई बहुत इंस्ट्रूमेंटल था ब्राइटन के विन में अगेंस्ट यूनाइटेड या and नरेंद्र गुरु हाँ, क्या बोल रहा है यूनाइटेड छोड़ने के बाद वेलबैक हैज स्टार्टेड टू परफॉर्म ऑलराइट. मतलब ठीक है ज्यादा जीता नहीं है ठीक है यार नहीं तो हमेशा खेलता है. अच्छा क्या बेच के नहीं जरूर Narendra Guru says loan will be a better option. No, I don't think so. We need Sancho, and I think he will do better. Fantastic player. He's got a lot of attributes. He can pass. He can cross. Only one winger in our squad who can actually cross the ball. That's Jadon Sancho. So I would rather keep him. But I respect your opinion. I see what your last season पूरा flop था. First 3 games भी इतना अच्छा नहीं किया. So maybe yes, I respect your opinion. But I think Sancho will deliver with tactics और good coaching. वो अच्छा player है यार. एमशे से सनडरलैंड हाँ भाई सनडरलैंड बिल्कुल माइक एशली वाज लिंक्ड टू सनडरलैंड. तो यार दूसरे गेम्स हमने देखे यार कौन सा गेम था ये अपना नॉटिंघम फॉरेस्ट और कौन था एवर्टन. एवर्टन हाँ दैट वाज वन ईच था. आई थिंक एवर्टन वाज बच गए और भाई टॉटनहम वुल्व्स यार टॉटनहम 1-0. आई मीन वुल्व्स ने अच्छा फाइट दिया बट आई थिंक हैरी केन स्कोर्ड द गोल. तो हेडर था मैंने फार पोस्ट पे हेडर था वो लेफ्ट एब्सोल्युटली एम्प्टी बट आई थिंक 1-0 अच्छा स्कोर है. वुल्व्स ने अच्छा डिफेंडिंग किया तो वन मोमेंट वो वेयर दे लेफ्ट हिम पूरा स्पेस दे दिया और एम्प्टी छोड़ दिया मार्किंग मिस कर दी. दैट्स व्हेन दे अदरवाइज वुल्व्स वुड हैव ग्राइंडेड आउट अ 1-0 रिजल्ट. तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस था एंड they took like 20 shots on target by the way. करेक्ट एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से. Yes. और फुलम ब्रेंटफोर्ड भाई वो तो फुलम ब्रेंटफोर्ड देखा क्या 20 मिनट्स में फुलम 2-0 अप. उसके बाद वापस आए वो लोग ब्रेंटफोर्ड आइवन टोनी और वो नारगार्ड एंड देन एंड में 90th मिनट में मिट्रोविच ने मारा.
यार सही सही गेम था, मस्त गेम था। आई थॉट ड्रॉ हो जाएगा, दे विल गेट अ पॉइंट ब्रेंटफोर्ड, बट यार ये Yeah. तो मिट्रोविच ने मार दिया। फुलम अच्छा खेल रहा है ये सीजन। अच्छा खेल रहा हम है। लोग ने फुलम को हम हाँ, फुलम को भी अच्छा, लिवरपूल को भी अच्छा फाइट दिया था उन लोगों ने। एंड अगेन करेक्ट। दिस कमबैक shows that they have that fighting spirit among them. तो अच्छा, Yep. I mean, they क्या need, they have to survive. हम्म, हम्म। Mm-hmm. तो क्या लगता है लोग बचेंगे कि रेलेगेट होंगे फुलम? नहीं, वो स्टार्ट तो शुरुआत तो अच्छी की है। अगर हाँ। एवर्टन का एवर्टन की कृपा रही तो वो लोग बच जाएंगे। वतन की कृपा, रैम्पार्ड की कृपा। Hmm. अभी भी तू बोल रहा है प्रशांत कि सबसे पहले रैम्पार्ड सैक होगा? मुझे लग तो रहा है बिकॉज उन लोग का हालत काफी, फॉर्म उन लोग का यूनाइटेड जैसा ही रहा है। लाइक दे आर फॉर्म फ्रॉम लास्ट सीजन, apart from the fact that they beat United, uh, not to mention, but उसके अलावा वो लोग भी काफी परफॉर्म। तो वैसा है। ओके, नरेंद्र says again, लोन आउट राशफोर्ड तो बेच रैशफोर्ड। ही गए हैं, मतलब। The problem with that is Lanendra Guru, he's on very huge wages, 200 grand a week. So even if we end up sending him for a loan, we'll have to shell out majority of the wages. So like 150 grand तो हमको ही बेचने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। तो इतना इतना कोई wages देगा नहीं लोन में। So I know you like Rashford. I can see that, and I really hope it works out for Rashford. I don't think United will sell him this season. तो होगा नहीं। So I'm really hoping that it turns out good. He plays well and scores loads of goals, and because academy se hai, and it feels really good when a player from academy does so well. But from what I've seen in the first three games the past season, more than his performance, uska attitude, especially last season, if I remember, towards the end of Chelsea game, that was a stinker from Rashford. Reece James Hmm. cross the cross जा रहा है, not tracking back at all. So attitude needs to change, and I'm not saying that it won't. If he keeps his head straight and plays to his strength, so he can do well. एमशे से आप अपने में से कोई मैच देखने यूरोप गया है? नहीं भाई, अभी नहीं तक गया तो हूँ। नहीं गया है कोई। मैं तो गया हूँ। यू गॉन? ओह, अग्रिम इज बीन कहाँ गया अग्रिम? कैंप नो? This was, yes, Camp Nou 2010, Mourinho's first El हम्म, Clasico, 5-0 हम्म। scoreline. To ओह वाह, अच्छा, आई रिमेम्बर दैट गेम, आई रिमेम्बर दैट गेम, आई रिमेम्बर दैट गेम, वाह वाह वाह, आई रिमेम्बर दैट गेम। Messi, hmm. the a way lot Messi walked in front of Ronaldo, that Hmm. that walk I'll always remember. So yeah, I remember Yep. that game. and Good, Really good, you high. witnessed that game. there was a lot of hype before that game because again, Mourinho versus Guardiola and Mm, everything. Yeah. mm. Will finally take the crown back from Barca, ये सब था उस time पे। And Yeah. highlight, and Barca destroyed that in that Yeah. particular game. Tank खोल Uh, दिया था Real Madrid को. some- I have been to a stadium in Europe, but I've not seen a match. Okay, And yeah, okay. about you. I have not been. I am about to go for the Leeds United game on the 19th of September, but यार Hmm. वीजा नहीं आया अभी तक। So I'm not sure whether I'll be able to make it. So टिकट्स का तो आई मीन सेटिंग हो गया है फ्रेंड के साथ, बट वीजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके वीजा बहुत डिले हो रहे हैं। Yeah. उन्होंने 6 to 8 weeks बोला है, अभी 3 week हो गया है, So, तो डोंट नो this is हाउ इट विल because of वर्क आउट। ये इसकी वजह से किया है ना, क्या नाम है इसका, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से. It's taking a lot of time. मे बी, मे बी। Yes. तो आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी फॉर द लीग, आर्टेटा वर्सेस पेप, बार्सिलोना प्रोडक्ट। अरे नहीं यार, आर्सेनल दे विल, Too early आई to आई say. एम कॉन्फिडेंट। Too early to say. नहीं नहीं नहीं। तो बोल सकता है जेरार्ड देन कैम्पा, एरिक बम हार्ट देन का देन बोनविटा का मैनेजर। पूरा अग्रिम एमसीएस भाई, में। ड्रिप वाज इनफ टू इंस्पायर मेसी। ये अग्रिम ट्रिप भाई क्या होता ड्रिप है? वाज, ये ट्रिप क्या होता है? मेरे को तो अब तक समझ में नहीं बियर्ड आया. बियर्ड आपकी शायद से, आई अच्छा, थिंक ही इज रेफरिंग टू बियर्ड. योर ओके. बियर्ड। ओके. तो, तो यार प्रीमियर लीग गेम की वजह बात कर ली है, एक बाय द छोटा सा वे, प्रीव्यू कर लेते हैं। हाँ I just बोलना। wanted to confirm, Samuel Umtiti is out of Barcelona. He's gone to Lecce. अरे लेकिन क्या मतलब, पूरा वेजेस तो बारसा ही पे करेंगे।
जो भी है, but he's out ना end of the day. Leche. Hmm. Leche, Club, right? Let's Leche, Leche. say. Leche. And Arsenal is 3-0 by the way. 3-0. Yeah, I saw that game. क्या इसने मारा वो डिफेंडर सालिबा. Saliba. Hmm. हम्म. Definitely. That's the match. तो यार एक छोटा सा प्रीव्यू कर रहे थे यूनाइटेड वर्सेस Hmm. लिवरपूल. क्या बोलते हो स्कोर लाइन? Yeah. प्रशांत क्या लगता है तुझे? फाइनल फिर से तो लिवरपूल. कम से कम 4-0 तो होना चाहिए. Like looking at how bad United are. अगर 4 से कम है, then हम्म. that will actually mean that Liverpool are playing bad. So Hmm. 4-0 That's is something. what. हम्म. अगर उससे कम हुआ, तो that would actually mean that Liverpool are not playing well this season, and it will be a हम्म. question on their credentials. Man Yeah. United करेक्ट. को पढ़ने वाला, we are going in ready-made with the expectation to lose. तो हम पे क्या ही प्रेशर होगा. नो नो क्या नाम उसका स्ट्राइकर डार्विन न्यूनेस नहीं है. नो जोटा. Hmm. नो फर्मिनियो. तो Hmm. 3 प्लेयर मिसिंग है. नो कोनाटे एट द बैक. एंड आई थिंक दूसरा डिफेंडर क्या नाम है उसका? आई थिंक ही वो भी मिसिंग है वो. द इंग्लिश डिफेंडर Jo- सेंटर बैक क्या नाम है उसका? आई फॉरगॉट हिज नेम. Phillips, Ryan Phillips. नहीं 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 Phillips नहीं. ना? अरे नहीं 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 नेथानियल नेथानियल फिलिप्स नहीं. और एक सेंटर बैक है ना. दे हैव कोनाटे, दे हैव Joel वैन Gomez. डाइक, दे हैव Joel Gomez. सॉरी Joel Joel Matters है. Gomez. Yeah, Joel Joel Gomez. Gomez. I think Joel Gomez. अच्छा वो, Yeah, Joel Gomez. अच्छा he is also missing Joel. now. I think he is also injured. वो या तो अच्छा. मैटिप दोनों में से एक इंजर्ड है. तो दोनों में से Matters एक तो इंजर्ड injured है. था. हाँ तो लेट्स सी कौन स्टार्ट करता है. तो वो थोड़ा शेकी होगा. वैन डाइक पे बहुत डिपेंड करता है हाउ हम्म. द लिवरपूल डिफेंस सेटअप. एंड अटैक में भी साला पे पूरा डिपेंड आएगा. तो साला विल स्टार्ट अलोंग विद लुइस डियाज. तो नंबर 9 के पोजीशन में पता नहीं कौन खेलेगा. दे डोंट हैव माने. तो माने वाज वेरी क्रूशियल टू देयर बिल्ड माने अप प्ले crucial एंड है. स्कोरिंग गोल्स. दे विल मिस हिम. बट अगेन Yeah. जोटा नहीं है. डार्विन न्यूनेस को कार्ड है. और फर्मिनियो भी इंजर्ड है. तो मैं नहीं बोलूंगा 4-0 है. तो आई थिंक वी विल लूज बट 1-0 या 2-0 होगा. नॉट 4-0. आई थिंक देयर विल हम्म. बी अ रिएक्शन फ्रॉम यूनाइटेड प्लेयर्स. और एरिक टेन हाग विल चेंज हिज टैक्टिक्स. थोड़ा डिफेंसिवली खेलेगा. एंड फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग इज ही इज अबाउट टू ड्रॉप हैरी मैग्वायर. So it is Oh, going to be हाँ. Varane and Martinez in the center defense. And I've also heard that Varane and Maguire will start and Martinez will be the defensive midfielder. So हम्म. एक मिनट ना. क्या कुछ कमेंट आया अग्रिम का. Once again, Agrim Bhai was traveling through streets of Barcelona. Then a kid came to him asking for shoes. Agrim Bhai gave him the best shoes. That kid grew up to become Lionel Messi. Always grateful. Remember your rules, Drip मतलब Campbell. ड्रेसिंग सेंस स्टाइल. Okay. अच्छा तो Okay. इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर ड्रेसिंग सेंस. Thank you. तो If ये you शूज mean तो it. वैसे ही है. वो नहीं क्या फेमस इंस्टाग्राम 80,000 के जूते 80,000 के. पूरा तेरा Yes. घर आएंगे इसमें पूरा घर. 150 रुपया लूंगा. 150 रुपया दूंगा. 150 रुपया देगा. Yes. MJ is But coming to कि भाई ऐसे क्या शूज बोल? देगी, and he Yeah. uh, Yes. Become the next wonder kid. exactly next one thing. ऐसा. But again, just coming back to your point, the Divya, I think like what हम्म. United has to probably think about is like if they switch off, in my opinion, their fullbacks are not convincing. Luke Shaw and who's that Exactly. other guy? I agree Who's the to other that. guy? Other left डालो fullback? दिए One डालो guy. Dallo. दिए They डालो. are yes. Diego Dallo is like still he can probably come back to defend. हम्म. But I think इधर से अगर if what's his name Ten Hag starts again with McTominay and Fred, it's going to be a chaos. ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन नहीं है हमारे पास. वही स्टार्ट करना है हमको. Yeah. एरिक्सन इज टू अटैक माइंडेड प्लेयर. वी सीन दैट. और नंबर 8 नहीं खेल सकता. And the other Yep. option is Donny van de Beek. So I'm not sure whether Yeah. he will use Donny van de Beek along with Fred. But मुझे तो हाई लाइकली लगता है कि वो फ्रेड मैकटोमिनी स्टार्ट करेगा. Which is again one thing I would like to add. जो आपने कहा कि फुल बैक्स नहीं है. तो कैसेमीरो's गेम ये है. This advantage लाता है Casemiro. Because if you look at Real Madrid, Mm. Casemiro used to go Mm. and help out full backs while defending. तो ये Yeah. Casemiro का बहुत एडवांटेज Yeah. पॉइंट है.
तो ये एक अच्छा गेम लाएगा बिकॉज आवर फुल बैक्स आर वेरी वीक डिफेंसिवली। टैरल मेलाशिया अच्छा है बट अभी वो किड है, एक्सपीरियंस नहीं है उसको इतना, तो उस पर रिलाय नहीं कर सकते। बट लूक शॉ इज हैविंग अ स्टिंकर। आई थॉट लास्ट ईयर इंजरी की वजह से उसका इतना नहीं था एंड ही विल कम बैक टू हिज बेस्ट फॉर्म, बट ही नॉट स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। जो फोर्थ गोल था ब्रेंटफोर्ड के सामने, लुक शॉ couldn't catch Ivan Toney's pace and that was very मतलब disgraceful. So let's see who he starts, you know. Of course Aaron Yeah. Wan-Bissaka तो start नहीं करेगा because they're looking to sell him to Crystal Palace, तो वो तो start नहीं करेगा। राइट में तो डलो ही होगा। And back to his लेफ्ट own में it's back. interesting to see whether he keeps correct Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka. So let's see if he keeps But fourth goal by the way. Arsenal scored fourth goal, Gabriel Jesus. Yes, Arsenal is लगता ripping है apart भाई teams, ripping apart. ये just सही हो गया। formality कर रहे हैं, you know. छोटी टीम के Yeah, सामने they're just doing formalities like how Man City does, yeah, वैसे कर रहा है। तो yeah, यार watch out for yeah, Arsenal, बहुत yeah, अच्छा चार्ज दिया उन्होंने, looking very good and finally Arteta's dream is coming true, you know. Trust the process, trust the process. yes. But I just wanted to say, like, if United wants to have a chance against Liverpool, no, they have to attack their fullbacks. I think Hmm, Rashford has to hmm. close down this guy. What's his name? Arnold. yes. Because if you Alexander do Arnold, not, correct. yeah, if you do not stop that guy, देखा उसने कैसा उस दिन पास दे दिया था इसको मोसाला को फॉर दैट गोल Hmm, फॉर लुइस डियाज। आराम से थ्रू दे देता है यार, मतलब वो क्या hmm. नाम है इसका, मैक्टोमिने और इन दोनों को खोल देगा वो मिडफील्ड। बहुत बहुत मतलब बहुत डेंजर है, दोनों दोनों फुल बैक्स उनके बहुत डेंजरस है, दोनों दोनों। यस। यू नो कॉन आई रिमेम्बर लास्ट ईयर गेम टॉटनहम एंड लिवरपूल, कॉन्टे ने उनको फुल बैक्स को जो एक्सप्लॉइट किया था ना डिफेंसिवली, मतलब आई वी ऑल नो डिफेंसिवली स्पेशली ट्रेंट अलेक्जेंडर नॉट ऑल दैट गुड, उनको एक्सपोज हाँ कर देते हैं। कॉन्टे ने 3-5-2 खिलाया और विंग हाँ बैक्स उसके जो एक्सपोज कर रहे थे ना, क्रेजी टू वॉच, क्रेजी टू वॉच। they, and they actually surprised. I remember that match myself. They actually took Liverpool by shock because they were not expecting कि भाई हमारे मतलब हमारे राइट ये फुल बैक्स को ऐसे एक्सपोज करेगा, बट कॉन्टे इज वेरी वेल और उसने बराबर से लाइक द फॉर्मेशन ही प्लेस 3-5-2 that was perfect in exploiting that in way to करेक्ट। counter. या And what तो हुआ 3 हुआ था ना वो मैच में 3-3 कुछ हुआ टू था, ऑल मैं टू नॉट ऑल टू ऑल टू टू ऑल इच। इट वॉज टू ऑल। Yeah, exactly. Okay. MJ says that the way things are going, it will be great to see Casemiro, Varane, and CR7 against Ipswich in the championship. Inshallah. देखो बाय द championship का वे तो बोल इप्सविच चैंपियनशिप में भी नहीं, इप्सविच लीग वन में। लीग वन one में। कैरन मैकेना मैनेजर उसका। अपना Karen मत. And by the way, तू नॉर्वेज बोलने क्या होगा, यू रोट इप्सविच। हाँ yeah, exactly. नॉर्वेज बोलने गया होगा. But यूरोप में तो दिख ही जाएंगे ना, काफी है. तो ये हम्म, okay. Continuing with the match, I think देखो ये मार्टिनेज का सीडीएम का लाइक बहुत रूमर चल रहा है एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. इफ टेन हाग इज इन उसने इफ ही हैज सीन इनफ व्हिच ही शुड हैव बाय नाउ, उसको लाइक ही वुड नो कि भाई मैक्सरेट से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है. तो डू यू गाइस थिंक मार्टिनेज को सीडीएम खिलाना लाइकली है इस मैच के लिए? डू यू थिंक दैट इज अ रियल पॉसिबिलिटी और डू यू थिंक इट्स जस्ट अ rumor? I think it may happen because It defensively, if can. you start Maguire and Varane, so one can play the high line, and Varane we know has got pace, so he can do the recoveries. So Varane stays back, Maguire pushes forward, helps Martinez. So the possibility is there. By the way, Gabriel Jesus' goal has been ruled out offside. Okay, Okay, I just Greener again. So it's 3-0. right. So yeah, coming back, so it may happen. It looks sensible because what you can do is if you put Martinez there, then you can put Ericsson and Bruno as two number eights. You know who can cr- offer a lot of creativity, or you can even Yeah. have Donny Van de Beek and Ericsson for more discipline because Donny Van de Beek and Ericsson are more disciplined than Fernandes. So to have against Yep. Liverpool, if he might end up dropping Bruno Fernandes, who knows? You know, to have more discipline in that midfield, he might even do that. But let's see. It will be a big step because Bruno's creativity is brilliant and he's the best. But of course, like other players, he hasn't been playing up to the mark. So never know. Starting lineup is going to be very unpredictable. कुछ भी हो सकता है वो.
रिएक्शन दे सकता है. He may drop Rashford, he may drop Maguire, he may drop Fernandes, he may drop Ronaldo. So we don't know. Again, Martial is back, so I'm not sure whether डायरेक्ट स्टार्टिंग लाइनअप में जाएगा या बेंच पे बिठाएंगे उसको. तो इट विल बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल और अच्छा होगा देखने के लिए क्या चेंजेस करता है. अगेन द सच ए ह्यूज गेम, बहुत बड़ा गेम है. तो लेट्स सी व्हाट चेंजेस ही मेक्स. Moving on to from the preview, I want to talk something about the Manchester ownership, the protest going on, and we all know there will be a protest on Monday as well. I don't think the empty stadium wala protest hoga, but again the one which is organized by MUST and the other groups, that will they're all in sync together and that will go forward. But we all this came out because Sir Jim Ratcliffe, who is a Manchester United fan himself and one of the biggest top billionaires in UK, came out and said that if United is for sale, he will be the first one to buy it. He will be interested in buying it. So a lot of people don't know about Sir Jim Ratcliffe, but now Prashant is well aware of the situation, the kind of ownership that he will bring to the club, and even if it happens, which is looks like the most possibility this time, ऐसा लग रहा है इस बार ऐसा हो सकता है शायद ब्लेजर प्रेशर में के बेच दे. एंड इफ इट्स टू जिम Hmm. रैटक्लिफ. तो प्रशांत क्या है जिम रैटक्लिफ? Who is Jim Ratcliffe and what do you know about him? Okay, so to begin with, Jim Ratcliffe is Britain's richest man. Okay, so that statement is in itself quite a lot to define him. He's one of the main owners of the company Ineos, his company, and Jim Ratcliffe indirectly. They are also owners of the Mercedes Formula One team, which have been doing very well in Formula One of late. So that is a brief explanation of what he has done in sports. He has, he had also been involved in the Chelsea bidding process. And in fact, what many people did note during that process is that he mentioned specifically that, I am a Man United fan. He had, when he was asked about his interest in Chelsea, he stated that I am a Man United fan, but right now I do not want to miss this opportunity. And eventually that bid was not accepted either, but he did put it out there. So it was almost like what people are saying is that it was almost like an audition that he did for Man United. So he does get the ownership for United. It will be a better ownership than Glazers. That is for sure. He's a born and bred Mancunian. So he is brought up in Manchester. He has been supporting Man United all his life. He was in the crowd at the Camp Nou when United won the Champions League. That is how much connected he is to Manchester United. So as Hmm. an owner, as a potential owner, he is perfect. The only few critics which have come around is that there have been a few hit pieces which have started to circulate in the media, and this is something which is very typical Glazer like, in my opinion, because he's a new owner and PR is something which Glazers are pretty good at. So there have been a few hit pieces which have been written against him. One of them mentioned that how he was, but they did not really do too many things very logically. It sounded more like an agenda. So one thing was one article had stated that he was pro Brexit because that would be good for the country, but eventually it only ended up being beneficial for him as a businessman. So those are the kind of articles which have come around for him. But if we compare his post ownership at the bottom line, right? We compare his Hmm. ownership, his control of a sports team, which is the Mercedes sports team, and you weigh it against what the Glazers have done with United, and before that with the Tampa Bay Buccaneers as well. The record speaks for itself. So he's a very good potential owner for United. Uh, Hmm. Overall. So he's there for sure. Agree, Divya, what do you think about his ownership from what you heard from him? Yeah, before I go ahead, I'll read out MJ's comment. Pep Guardiola is a genius. The football is mesmerizing. The operation is sick, but it will never be Man United. ठीक है ना भाई, हंस लो थोड़ा. Gary Neville, he will never be. अच्छा, it it will be. अच्छा, Gary Neville ने ऐसा बोला है. हाँ Pep बोला Guardiola था. is a genius. Of course, of course. This squad, ये squad को तो
गॉर्डियोला और क्लॉप भी नहीं जीत सकते बिकॉज स्क्वाड में इशू है पूरा. Why do these pundits think we want to be Manchester United? Like there is some goodly, Godly, godly godly thing thing in in football. football. They are currently a laughing stock. Absolutely, absolutely. As Very hard it is to take by heart, but it's the bitter truth. Mm-hmm. Isn't Lakshmi Mittal the richest from Britain? I think it's the Hinduja family. Yep. Not even Lakshmi Mittal, Hinduja family है, वो है. हाँ. But yes, it's one of the richest top billionaires, Yep. Sir Jim Ratcliffe. Yep. Uh, United are the new MLS. Casemiro 30, Varane 30 plus. Varane 29 है यार. CR7 हाँ. near 7 nearly 78. Now I think Casemiro is a good deal. With 30, 60 million ज्यादा है. But as again, week if you would have acted earlier तो थोड़ा कम होता. But I Yeah. think he will bring a lot of things that are missing to the United squad. पहले तो लीडरशिप है उसकी, क्वालिटीज जो है डिफेंसिवली, ये स्टील इन दैट रॉक सॉलिड है. जैसे कि मैंने पहले कहा, एकदम हरामी प्लेयर है, एकदम मतलब टैकल तोड़, पाव तोड़ देगा, टैकल वैसा करेगा टैकल. I've seen him at Yeah. Madrid. बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है. He goes out and helps pull back. Maybe he's not as good on the ball as Frankie de Jong, but I think what's important is he will protect the back four, pass it to Bruno and Eriksen to create more chances. So that's what I'm looking from Casemiro, and if we can sign another midfielder who is a ball progressor, it would be brilliant. Hmm. Uh, I think Casemiro is best CDM, too good for United. Yeah, perfect. And too good for United. And I think, yeah. So coming back to Prashant's point, what do I think about Sir Jim Ratcliffe? I think what he may have some of his bad history, para history bad रहेगा in terms of his comments on Brexit or support किया, जो भी है. But from what you look at the ownership that he's had, in compared to Glazer, as Prashant rightly said, it's way better. And to top it off, uh, cherry क्या बोलते हो? Cherry in the cake, ice on the cake, क्या Cherry बोलते in हो the उसको? cup. Cherry in the Yeah, cake. he is a United fan. He knows. Prashant rightly said, born and bred Mancunian. He knows what Hmm. it is to be a United fan. He breathes United. He knows all about our club. So he is going to hire people who are actually footballing side. Not, Yep. and what is the best part of his ownership is with a change in ownership, Muto will go, Fletcher will go, Richard Arnold will go. We saw at Chelsea. You know how good Peter Cech and the other women who was handling the transfers, they were very good, but they let them go. And I'm pretty confident if we have a change in ownership, John Muto will go, Darren Fletcher will go, the CEO Richard Arnold will go. It will be changing the entire structure, and that will not have an instant impact. It will not help United immediately, but if you look at the long term, it will be very beneficial, and we will have proper footballing structure, proper footballing people handling making footballing decisions. That's very important. ये जो यूनाइटेड में हो रहा नहीं है पिछले 10 साल से, फुटबॉलिंग पीपल डिसीजंस नहीं ले रहे. वुड एड वुडबॉल लिटरली फुटबॉल मैनेजर गेम खेल रहा था. उसको जो पसंद आया ट्रांसफर करा था. तो वो एक चेंज होगा. just to हाँ, add क्या बोल one रहे more, one very हैं? crucial thing I forgot to say. Uh, Ratcliffe is already into football ownership as well. He is he has invested in Nice, which is the which is the French club. So even they have been doing better after he took एब्सोल्युटली over. बहुत फैंटास्टिक कर रहा है. बहुत अच्छे खेल रहा है वो लोग. हाँ, वो एक मुझे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना है. सो उसको फुटबॉल ओनरशिप का भी पता है. तो मतलब ये लोग हम्म. ग्लेजर नहीं है कि भाई बैंकर्स को उठा के डाल देगा. तो वैसे तो और वो उसने कहा, if you read his comments, he said that we don't need dividends and all. We don't need to take the money from club. We will have different ways of making money. So he वो जो ग्लेजर्स ने किया वो नहीं करेगा. So that's very good about Sir Jim Ratcliffe, and I am really hoping the fans push for it. There are protests, and at the end, Glazers end up selling the club. So I'm really hoping, but like मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, immediately नहीं होगा. टाइम लग गया थोड़ा, but I'm really hoping that this turns out to be, ये हो. एमशे क्या बोल रहा है ये? ब्रो रैटक्लिफ से ज्यादा अमीर अनुपम मित्तल है, शार्क टैंक वाला, इंडिया वाला. अरे भाई, इट्स नॉट अबाउट दैट. ये सब इट्स दोगलापन है. अबाउट दैट ही ये सब दोगलापन है. नहीं, वो अनुपम मित्तल नहीं, वो दूसरा है, उसका नाम कोई और है. नहीं, बट आई एम सेइंग दोगलापन नहीं, वाला वो दूसरा शार्क है. टैंक वाला ही आई एम सेइंग लाइक वो ये फ्रेंड्स, ये सब दोगलापन है. रैटक्लिफ एट रिच इनफ. आई थिंक एक ग्रुप बाय करेगा. नहीं नहीं, रैटक्लिफ हाँ. इज इनफ. उसके पास फंड्स है टू बाय द क्लब.
So your point, MJ, okay, isn't Mittal family the richest? I have also read that, but uh, like when people have been quoting about it, they have also been saying that Ratcliffe is Britain's richest. So maybe he's one of the richest. Maybe that's a debatable point, but he is damn rich. So Glazer जैसा नहीं है वो, so don't worry about it. अगर वो हुआ फोन में तो अच्छा ही रहेगा. It's just PR thing. Remember, Spotify wanted to take Arsenal. नहीं 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 नहीं. Spotify was a slightly different case. मतलब हाँ उसका भी ऐसे ही था that he is an owner and everything. He came out stating कि हाँ भाई I want to sell the club. But then Spotify was मतलब Spotify did not have a proven record. Spotify owner did not have any experience. ये बंदा यहाँ पे he is a British guy, he is in football. Plus ग्लेजर पे प्रेशर है सेल करने का. आर्सेनल के ओनर पे उतना प्रेशर नहीं है सेल करने का. वो लोग के फैन उतने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जितने यूनाइटेड में हो रहा है. So Correct, that is, correct, correct, exactly. and the thing is that because when you say PR, M-Shape, let me explain. Say PR is actually a very important factor in this because the protests are happening, because bad PR is happening. That is where the Glazers are actually facing the pressure. That's where they are coming under pressure. कि हाँ भाई, we have to sell the club because that is the only thing that they are concerned about. अगर if we get bad PR, the stock price falls, and the stock price falls, they get a loss. So that is how the whole cycle works. So somewhere there is a PR involved in it, but it is a part of it. Correct, absolutely. And thanks, Prashant, for pointing this out and giving us the insight. It's brilliant what you explained to us. Very nice way how it actually works and how Sir Jim Ratcliffe's record is. Which he is absolutely correct. Good record with handling the Formula One team and then record with handling the football club in Nice. So, मतलब overall उसका experience अच्छा है. And I think if it happens, it will be a brilliant. Ratcliffe 10 billion wanting to buy 3 billion, no bids yet. हाँ बिड तो अभी टाइम लगेगा भाई को क्योंकि ऑफिशियल दे बिल हैव तो कुछ नॉट डाला नहीं है. करेक्ट क्योंकि ये ओपनली कहानी उन्होंने कि दे आर पुटिंग द क्लब फॉर सेल. तो हम्म. until and unless they put the club for sale तो वो होगा नहीं. अदरवाइज हॉस्टाइल टेक ओवर करना पड़ेगा. दैट्स हाउ वी थिंक कि स्टॉक्स गिरेगा और ग्लेजर्स दुखी होंगे बेच देंगे. एग्जैक्टली दैट्स आवर बेस्ट होप. द वैल्यू फॉल्स क्योंकि if you don't buy their products, if you the stocks fall, उनके sponsors पे pressure आएगा. That's when they will think about selling the club. But हाँ प्रशांत क्या बोल रहा था? I was saying, you mentioned the sponsors. I was saying that is already happening. So Correct. would like to add to that. Adidas का जो sponsorship था, that was supposed to be 75 million a year. I believe it was 75 million dollars. It may be euros or pounds, I don't remember, but it was 75 million a year. Considering that United made the Champions League, the fact that United are not in the Champions League, that revenue has been cut. Similarly, the sponsorship from Team Viewer has been cut. They have, in fact, come out, and as everyone knows, they have come out and stated that they will not even extend their partnership with United because ever since Team Viewer became United sponsor, their stocks have also started falling. So Hmm. there is some there, and that's how the Glazers will fill the pinch. Otherwise, they will not care. Correct, correct, absolutely correct, Prashant. So very good points जो आपने बताया. So guys, we're almost towards the end of the show. Anything that you two guys want to speak about, Agrim, Prashant? No, that's it from me. All They're all good to go for tomorrow's All good. I think fixture. we've covered everything. Cover everything from Casemiro signing to United's ownership to Aubameyang sale. That's Barry Thorpe says that's what we want. Leeches out. I think lease out. That's what we These are want. Lease out. Okay. Uh, I'm sure that if stocks go down, Glazers will sell TV rights or image rights. Fans can't mm-hmm. have their way against a billionaire. Absolutely. I mean, they can't do what Barcelona did, the pulling a lever and all those stuff. So I heard somewhere that they're thinking of doing that, but I think United replied to that, saying that that's not right and they're not planning any such thing. Because if that happens, it's going to be a massacre. Fans are going to protest
a lot. This is going to get louder and louder. So I don't think Hmm. that's even a chance that they will end up doing that. But yes, Yeah. in the future, yes, Sorry. Prashant, So go on. the TV rights in England and Spain are very different, right? So in Yeah. Spain, Barcelona actually have their own TV rights. In the Premier League, by TV rights, the only thing he can do is they can maybe sell the MUTV part of it, but then that is not going to be as beneficial for United as that's just how the structure is. So it will not be as beneficial for United as it was for Barcelona. Just to respond to and shade. Yeah. Yeah, fair enough, guys. So I think like I said, we've covered almost everything. So spoken about Aubameyang and Chelsea transfers, Barcelona's player registration. Before we go, let me read out MC's comment. It's not happening. Like one can force an owner out. I still think Neville and all make huge money directing the hate towards Glazer. Glazers are bad, but don't get me wrong. Maybe no. I don't think these journalists. I mean, the ex-players make money from that PR. So they Sky Sports से actually already कमाते हो उतना हो. So Mm. irrespective of whether they put that hate or not, doesn't matter. So maybe they do it to get more reactions out of fans and everything. But I think Gary Neville loves the club. So he's been a player. He loves the club, and at the end of the day, he's also seeing a club getting ripped apart. But isn't everybody's business owner like that? Including oil owners. Like what, MC? समझा नहीं मैं. But he's saying like all business owners are like that. मतलब basically like money minded, But ऐसा excluding कौन से oil ओनर owners. होते हैं जो डिविडेंड्स निकालते हैं क्लब से? They हाँ, the exactly. problem with that is they bought the club on debt. वो डेट क्लब पे डाल दिया because before that we did not have any debt. 600 बिलियन में खरीदा Hmm. and 600 मिलियन में खरीदा and put their entire 600 million on United. We are still on that same debt. वो डेट पे हमने already कुछ 10 मिलियन इंटरेस्ट पे कर दिए हमने उस पे. And on And top of that they remove dividends every year. Every year dividends निकालते हैं वो लोग. तो हाँ exactly. प्रशांत. So no one wants a business which fails. If Hmm. someone over a business, अभी ये टॉड जोली बोलो, even लिवरपूल के owners बोलो, see, even they have amazing owners. FSG, I mean, I believe the current owners are FSG, right? So उससे पहले जो Yep. owners थे, they were quite Gillett. bad, but eventually sold the club, and see, the new owners are pretty good. Although they are not investing like Man City are, but they are challenging up there. So if a person invests in a business and shit, they will still want that business to succeed. The Glazers are not doing that because उन लोग का खुद का पैसा भी नहीं लगा है. Secondly, uh, uh, the kind of takeover that Glazers had is not even allowed in the current day Now and age. it's not allowed. Correct. Hmm. So that would answer your point. Okay, another comment. Isn't football a business? If you put billion, you expect to earn from that, don't you? But they have not put a billion. M-shape. That's the whole point. They have not Exactly. to the club. Even the players, even the 1.5 billion, which so many experts keep saying, oh, they have put 1 billion into players. They have not, MJ. They have basically used that money from the funds that the club has, not from their pocket. So that's one point. Okay, again, charity थोड़ी करने बैठे हाँ same thing. So they have not put one ये penny into क्लब the उन्होंने खुद के पैसे से नहीं खरीदा है. ये क्लब उन्होंने लोन लेके डेट लिया है और वो क्लब पे डेट डाल दिया है और उसका इंटरेस्ट वो नहीं भर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट क्लब भर रहा है. तो दैट्स व्हाट पिसिंग अप. यू लुक एट रोमन इब्राहिमोविच. द इन्वेस्टमेंट इज डन फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. ब्रिलियंट चेल्सी ओनर, वो बहुत बढ़िया ओनर था. ऑफ कोर्स इश्यूज थे उसके एंड ही हैड टू गो. दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. नो अदर क्लब डज इट. Yep. हाँ एग्जैक्टली एंड क्या बोलते हैं तो Abramovich बोलो या फिर जितने भी दूसरे there are many Chinese owners for lower clubs. Even they are investing quite well. But थोड़ा थोड़ा पैसा सब डाल रहा है. But Glazers are the only one who are actually just taking out the money from the club. So they have literally no interest. Huh. Why would Glazers use their money to expand business? Owners use companies' money, no? No, that's not No. exactly the.
Uh, I mean, would any one of you want to answer that? Again, Divya. No, Prashant, go on, go on. I think you're So, making a lot of sense. So yeah, uh, bolo. Abhishek, Glazers, I mean, okay, whenever someone puts like takes over a Premier League club, for example, a very good example of that would be Man City or even Newcastle. Let's Mm. take Newcastle. Okay, so Newcastle will receive some money from their owners. The owners will pump in some money from their pocket in the initial stages. Once the business grows enough, that's when they start getting the profit. Even better Yep. example would be there is a club in the lower league. I forgot their name. Uh, the Hollywood actor Ryan Reynolds has purchased that club. Okay, Wrexham. why do you Wrexham purchase? FC. Sorry, It's what's the name? Wrexham FC. It's a Welsh club called Wrexham. Wrexham. Wrexham, yeah. Wrexham. So they have purchased Wrexham. Why do you think he would invest in a club like that? So Yep. he will invest initially. He will obviously have everything documented. So his idea there is he will have the entire journey up to the Premier League and maybe beyond. He will have that all documented. And once Wrexham becomes a brand, uh, he will start earning from it. What's happened with Leeds United? Leeds United had a documentary on themselves when they were in the championship. So by Mm. they started building that brand, people saw that documentary. Leeds was already a brand by the time they came into the Premier League. I saw that documentary. I know who Calvin Phillips is. I knew their players even before they came into the Premier League, and they are now Yep. survived. The owners have already earned back from their investment there. So that should explain it. Yeah. Divya and Agin, back to you guys. Russian oil Gulch and oil FC have unlimited money. Bhai, not the That's point, true. bhai. Unlimited money ka. City reported record values of 569.8 million pounds for Mm. 2020-21 season. Middle East FC Mm. भी तो पैसा कमाया. अरे भाई वही तो Mm. बोल रहा है वो उन्होंने खुद का पैसा डाला है एंड देन Mm. रिटर्न इन्वेस्ट कर रहा है. कोई भी Yeah, ओनर the return किसी of भी क्लब का investment ले is लो, high anyway. Yeah. nobody has removed dividends. किसने भी निकाला नहीं है क्लब को. क्लब से लिटरली It's डिविडेंड्स again निकाले उन्होंने हर सीजन. it's again You go reinvested. and Whatever Google it. whatever the profits you earn, right? You reinvest. एग्जैक्टली एंड ये जो पैसा उन्होंने डाला है वो उनका पैसा नहीं है, क्लब का पैसा है. लोन लेके Yep. डाला है, जो प्लेयर्स पे स्पेंड किए है वो उनका पैसा नहीं है. दे हैव पुट फ्रॉम द क्लब्स पॉकेट, क्लब्स मनी. तो Yeah. नो, तो ग्लेजर, दिस इज व्हाई पीपल हेट ग्लेजर्स. प्रॉब्लम है डेट में डाल दिया. वी डिडंट हैव अ सिंगल डेट बिफोर दे टुक ओवर. डेट में Yes. डालने के बाद एग्जैक्टली डेट में डालने के बाद डेट पे इंटरेस्ट कितना भरा है हमने. एंड ऐसा नहीं कि यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसका डेट निकाल दो एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग प्रॉफिट्स. दैट्स हाउ यू डू बिजनेस. इंटरेस्ट डाला Yep. है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. चीजें इन्होंने जो की है, इट्स बिन शैम्बल्स व्हाट दे हैव डन. सो आई नो, True. आई आई एग्री टू योर पॉइंट व्हाट यू सेइंग कि रशियंस और मिडिल ईस्टर्नर्स के पास बहुत पैसा है, बट देयर इज अ वे टू डू अ बिजनेस. इट्स जस्ट अबाउट फिलिंग द पॉकेट्स एंड नॉट Yeah. थिंकिंग अबाउट द क्लब. दैट्स व्हाट वी फैंस हेट अबाउट. Yep. तो गाइज मेरे तरफ से तो ऐसा ही, और कुछ नहीं है गाइज. एनी वन थिंग यू वांट टू ऐड अग्रिम भाई? I don't know. Like, let's see for like tomorrow's game. Newcastle and Man City. That will be an interesting game to watch. Absolutely. And we'll be doing a watch along on your channel. Please Yes. make sure to subscribe to Agrim Bhai's channel. So it'll be fun and मजा आएगा. Battle of Yes. Middle East owners. MCS खुद का पैसा भी नहीं गया, डिविडेंड्स भी उठाया. टेक्स्ट बुक जीनियस. Yeah, absolutely. टेक्स्ट बुक जीनियस. तो guys, thank you very much. हाँ प्रशांत, क्या बोल रहा है? I think that's it from my end as well. So yeah, we are done for Thank today. you, guys. Thank you very much. Arsenal have won the game. 3 points in the bag. They are leading the table with 9 points. And, for a change, Arsenal are on the top. But yes, Mm. we will be joining you guys tomorrow. अग्रीम के चैनल पे मजा आएगा बहुत लाइव Yes. स्ट्रीम करने को. बैटल ऑफ मैन सिटी एंड वेस्ट हैम. आई थिंक मैन सिटी विल विन, but not West Ham. Newcastle, I think Man City will win, but it will be fun. Let's see what happens. And of course, don't forget to join us for the
Manchester United Liverpool game Monday night, Yeah. 12:30 India time. So again, big game. Not keeping hopes. I'm sure Prashant also not keeping hopes. We know that it's going to be a loss. कितना disgraceful loss होता है या थोड़ा आंख Hmm. मुंह दिखाने वाला loss होता है देखते हैं. Thank you very much. Before we go, MC's comment, great stream like a grim by drip. भाई तेरा ड्रेसिंग सेंस का फैन है ये बंदा. Yeah. Thank you. बहुत ज़्यादा obsessed हो Thank गया. you very much, guys. Make sure to smash the like on the video, subscribe कर देना चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो, and we'll see you tomorrow. Bye for now. क्या हो? Bye. Good night.